वर्षा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं गई थी अपने फैमिली के साथ डिनर पे, ओके, एंड वहाँ से आने के बाद आई एम शूटिंग दिस इंट्रो एंड यू कैन सी माय मेकअप हैवंट बज्ड इवन अ बिट, ओके। मेरा बस लिपस्टिक थोड़ा सा गया था बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ फूड, तो आई जस्ट हैड टू टच अप माई लिपस्टिक, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हाउ आई created this look, please keep on watching and आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं इस टाइप के बहुत सारे लुक्स और फैशन रिलेटेड वीडियोस, एक्सेसरीज हॉल और आगे भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो आई थिंक यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, ओके गाइस। तो मुझसे जुड़ जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कोई लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन चाहिए समर्स के लिए या फिर इन जनरल किसी भी सीजन में, इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन, मेरा खुद का ड्राई स्किन है, ओके, बट आई स्टिल लाइक दिस फाउंडेशन and it's matte for a change. I'm in love with the matte foundation, so I'm just going to shake it a little bit. Usually I don't shake my foundations, but इसमें I guess लिखा हुआ था शायद shake, हाँ इसमें लिखा हुआ है shake well before use, so that is why I'm going to shake my foundation. and मैं बिल्कुल थोड़ा सा directly face पे लूँगी, 1 2 and I'm going to blend it with the brush. ये फाउंडेशन मैंने जब से लिया, मैं मुश्किल से इसको 3 से 4 बार यूज़ की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। एंड यूजुअली नॉर्मली व्हेन आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो आई स्किप फाउंडेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आई ईदर गो विथ अ tinted moisturizer or a tinted sunscreen and a little bit of concealer if I want to cover my blemishes, that's all. But since I'm making videos these days, I'm feeling like going all out with my foundation, with my concealer. तो मैंने इसे स्प्रेड तो कर दिया है, बट अब इसे ब्लेंड करूँगी मैं दूसरे ब्रश से, ओके। मैं नेक पे लास्ट में अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। मेरे नेक पे टैनिंग है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन माई नेक, बट सिंस आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, यहाँ पे वाइट स्ट्रिप्स है तो उसमें फाउंडेशन लग जाएगा, तो मैं लास्ट में अपना नेक का मेकअप करूँगी, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फेस का करूँगी। तो फाउंडेशन लग चुका है, नाउ आई बी ब्लेंडिंग इट विद दिस मार्श का ब्रश SH बोलते बोलते आई एंड अप fumbling a lot. एंड ये फाउंडेशन को ना आपको पूरा सेट करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़े देर के लिए कहीं जा रहे हो एंड ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो ये सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है, लिटरली सेट्स इटसेल्फ। बस आप कंसीलर सेट कर लो एंड यू आर गुड टू गो, यू डोंट हैव टू सेट योर एंटायर फेस, इट वोंट budge, it won't smudge, just make sure you don't touch your face too much. But it is matte, but it has this glowy finish to it which I really love, and that's why it is the first ever matte foundation that I like. Otherwise I hate matte foundation. As a dry skin girly, I don't like the feeling of matte products on my skin. Even after skin prep मुझे फिर भी matte products पसंद नहीं है. I like dewy finish, I like dewy finish. जब से मैं यहाँ आई हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर गोइंग फॉर डिनर टुनाइट। इतने दिन से, मतलब मैं 1-2 महीने से ऊपर से ही हूँ यहाँ पे, 2 महीने से हूँ यहाँ पे, बट एक बार भी हम बाहर नहीं गए फॉर डिनर। टुडे आई रियली वांटेड टू गो आउट फॉर डिनर। माई नोज इज स्टफ्ड लिटरली। यहाँ का बैंगलोर का मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना कि सर्दी और बुखार और फीवर, मतलब आपको कब आ जाएगा यू नेवर नो। अचानक से ठंड, अचानक से गर्मी, अचानक से बारिश। एंड आई एम समबडी हू सेंसिटिव टू कोल्ड, यू नो। टुडे आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन माई फेस। मैं बहुत ही लाइट रखना चाहती हूँ अपना बेस को। एंड टुडे आई एम यूजिंग ड्राई स्पॉन्ज। मैंने इसको वेट नहीं किया, मैं भूल गई, एंड नाउ आई एम फीलिंग सो लेजी। मैं उठना नहीं चाह रही अब अपनी चेयर से। पहली बार मैं ड्राई स्पॉन्ज से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ, इट्स ओके, लाइक आई डोंट वांट फुल कवरेज,
तो ये अब्जॉर्ब भी कर ले ज़्यादा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विथ फ्लॉन्टिंग माई फ्लॉस टुडे। Okay, we have kept the base very light and very minimal. Now I'll be using this concealer from Armani, या फिर Maybelline यूज़ करूँ, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इसको यूज़ करते हैं बिकॉज मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए नहीं आज। एंड ये बहुत मतलब ये मिनिमम कवरेज नहीं है, इसका मीडियम टू फुल कवरेज ही है, बट सिंस इट इज़ वेरी क्रीमी और एंड वेरी लाइट, तो इसे मैं ब्लेंड करके अच्छे से लाइट कवरेज भी रख सकती हूँ। एंड आई लाइक दिस कंसीलर अ लॉट। ये बहुत नेचुरल फिनिश देता है एंड एक ग्लो देता है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। So I'll be blending it out, but let's just wait for a few seconds. आप जब कंसीलर अपना ब्लेंड करो ना, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल एकदम अच्छा कवरेज देगा। अच्छा कवरेज बोले तो फुल कवरेज, मतलब अगर आपका कंसीलर मीडियम टू लाइट कवरेज का भी है, बट इफ़ यू अप्लाई लेट इट रेस्ट फॉर अ बिट, तो आपका कंसीलर जो है वो बहुत ही फुल कवरेज एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट। I like the glow it gives. Okay, so the concealer is blended with this brush. Now I'll go over with a beauty blender because, as you know, I don't like brush ka finish. So I'll be using, oh shit, yeah, I'll be using this micro finish on my beauty blender to make it a little bit damp, because मेरा ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प नहीं है, तो मैं इससे डैम्प कर ले रही हूँ ताकि साथ साथ मेरा बेस भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड थोड़ा सा ब्लेंडर भी डैम्प हो जाए ताकि वो ज़्यादा कंसीलर अब्जॉर्ब ना करे। तो मैंने इसको डैम्प कर लिया है अपने सेटिंग स्प्रे से। नाउ आई गो ओवर विद द ब्लेंडर। गाइस, जो भी एक्सेसरी मैंने पहना हुआ है अभी इस वीडियो में, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कहाँ से मैंने ये ब्रेसलेट्स लिया है, कहाँ से रिंग्स लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देखो। मैंने उसमें अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स दिखाए हैं फ्रॉम अ पेज, तो आप जाके देखो, यू माइट लाइक।
I will link it down in the description, okay, for you guys. I really like to take my time with my बेस मेकअप एंड आई रियली लाइक टू ब्लेंड अच्छे से बिकॉज मुझे केक की फिनिश बिल्कुल नहीं पसंद है. अगर मुझे ज़्यादा लगता है आई पिक द प्रोडक्ट अप ऑन माई ब्लेंडर. मुझे ऐसे कैजुअल गोइंग आउट में बहुत ज़्यादा केकी मेकअप नहीं पसंद है और हैवी तो बिल्कुल भी नहीं. See, my flaws are still visible. I don't mind flaunting my flaws at all because we are humans and humans will have flaws. I don't want to be a porcelain doll. It's okay to have breakups, it's okay to have scars, like, it's okay to be you, right? I like makeup because I think it really enhances the beauty that you already have. Okay? Nobody needs makeup. Of course, nobody needs makeup. अगर need होता ऐसा तो भगवान जी जैसे खाने पीने की चीज़ें पेड़ पे उगाते हैं ना, तो वैसे मेकअप भी होता. बट we don't need makeup, right? We are naturally beautiful. But makeup is something that make you feel more confident about what you already have. Okay? And I personally see makeup as art. Like, I have a blank canvas and I'm painting it. Like, I like putting some colors. I like, play with my makeup a lot. If you know how to do your makeup, you know, it can really enhance your features a lot. Like, I read this quote on Instagram that girls are beautiful without makeup, but with right makeup, she can be pretty powerful. So, yeah, if you know what suits your face, what suits your style, and your aesthetic, you can really make yourself look amazing. I know you all are already amazing and good looking, but like, makeup really changed the game. At least I feel that. Okay, so the base is done. I'll just quickly set my concealer. I won't be setting the entire face. I'll just fix where I generally crease because I have hooded eyes and I crease a lot around my eyes, okay, and a little bit around my nose. So I'll be setting this area only, and I'll leave my cheeks as it is. I like glowy finish, so that's why. So for powder, I'll be using my personal favorite, Laura Mercier powder, translucent. Okay, honey. So I'll be using this from Matte Pack. It's from Pack. I'll just use it. I'll pour some powder on my hands. Okay. I'm just going with back of palette, and I'm making sure everything is nicely blended. Crease पे always there's, मेरे crease पे हमेशा product ऐसे crease हो जाता है. So I like to remove all the products that settles on my crease with a liner brush. Like, it's a mandatory step for my own makeup. Okay. So I'll be using powder now. This Laura Mercier powder now is very finely made and बिल्कुल भी heavy finish नहीं देता. It gives very natural finish. Okay, my eyes are set now. I'm using powder and I'm diffusing it. Like, I'm not taking a lot on the pad. I'm, using very little. So I'm just pressing the powder down on my face. If the sardi is not going on me.
I set the areas where my concealer usually crease, and बाकी पूरे फेस में जो भी लेफ्ट ओवर था ना, उससे मैंने बस हल्का 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 से डार्क कर लिया है. आई डोंट वांट टू मच पाउडर ऑन माई फेस. ओके, now I'll be baking under the eyes a little bit just because I'm going to do my eyes. Otherwise अगर मुझे आई मेकअप नहीं करना होता, I would have just went with my blush and everything and liner and mascara. But since we are going to use this palette today, and इसमें उतना fall out नहीं है, but still I like to be little careful ताकि हमारा बेस ख़राब ना हो. So that is why I'm going to bake just a little bit. Okay, ऐसे बोलते बोलते मैं फंबल करने लगती हूँ because I'm literally just talking to myself in the camera, like you can understand, and I'm not a pro at this. Like I've just recently started and I'm just getting used to it slowly. ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया फ्लो में गाइज. आई डिड नॉट प्लान टू बेक माई इंटायर फेस, बट मैंने फ्लो में ऐसे लगा लिया. पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में चली गई थी. मैंने फ्लो में यहाँ पे पाउडर्स अप्लाई कर लिया. इट्स ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़ हनी. अब खरी लिया तो अच्छे से कर लेते हैं ना. ठीक है, विल लेट द पाउडर्स रेस्ट एंड विल मूव ऑन टू द आई मेकअप नाउ. Let's welcome our OG palette from Too Faced. The Natural Nudes. I love a good neutral palette and मैंने इसको बस एक बार अच्छे से यूज़ किया है एक वीडियो में, बट उसके अलावा मैंने इसको यूज़ नहीं किया. एंड आई थॉट आई शुड गिव इट अ गुड जस्टिस बिकॉज इट इज़ गॉर्जियस. ओके, जस्ट लुक एट द शेड्स, इट इज़ गॉर्जियस, राइट. सो स्वॉच भी मैं आपको दिखाऊंगी बट एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो उसका टाइम स्टैम्प मैं डाल दूँगी. सारी चीज़ का टाइम स्टैम्प मैं डाल दूँगी. ठीक है, सो यू डोंट अगर आपको जल्दी से स्वॉच देखना है पहले एंड उसके बाद आई मेकअप देखना है, तो इसलिए मैं टाइम स्टैम्प्स. या आई एम फंबलिंग अ बिट टू मच टुडे एंड आई एम फीलिंग पिस्ड. Not gonna lie, pissed at myself, but it's okay. I'm a beginner. Don't reject me. I am a learner. Yeah. So I am wearing a nice, beautiful dark brown dress. Okay, I'll put the link in the description. But मैं उससे मिलता जुलता ही कुछ लुक करना चाहती हूँ. A little bold today. So start करते हैं ट्रांजिशन से. I'm using this shade for transition called Nude right here. Okay. I'm slowly building the intensity, not going over at once. I hope the colors are visible. Okay. And guys, if you have hooded eyes like mine, don't ever get demotivated that you cannot do eye makeup and do creative eye makeups. You can follow me, you can subscribe me, because I myself have hooded eyes, right? And I'll keep coming with such videos so that you can also learn how to do your own makeup and how to do good eye makeup on hooded eyes. टेक योर टाइम विथ योर मेकअप. ओके, अगर आपको कहीं जाना है तो पहले स्टार्ट कर दो, बिकॉज हड़बड़ कोई चीज़ अच्छा नहीं होता. एवरीथिंग डिजर्व्स अटेंशन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग मेकअप,
because makeup is an art, and as I say, art takes time. So does makeup. Okay. If you want to create good makeup, good eye looks, you have to give it time in blending and everything. Okay. I'm happy with the transition. Now I diffuse this transition with a light shade, which is right here, called Swan, and I'll be taking another fluffy brush, clean fluffy brush, and I'll take that shade, okay, and diffuse the edges of my transition. I hope you can see. Now, we'll take the shade right here called Cocoa, and with a little slightly smaller fluffy brush, which is from Pro Arte PE23, and I'll be taking the shade and applying it right here, slightly below the crease, okay? So, I'm just applying it below the crease. Still, we haven't touched our lid area, okay? I'm applying right below the crease. I hope you can see the difference, okay? I had no vision in my mind कि मैं कैसा makeup करूँगी. I'm just going with the flow, okay? Like, even I don't know what is going to turn out, what kind of look is going to turn out, but I'm just going with the flow, with my creative flow. Okay. Now I'll be taking that exact brush that I used to diffuse my crease. It is fairly clean. I'll be just blending everything together. I feel this eye does a little bit less pigment, so I'll be adding a little more. I'll be going over with the brush and blending everything together. Now I'll be taking this brush from MAC, and I'll be taking this darkest shade right here called Truffle, okay, and I'll be blending the color from here to here in a uplifting motion. I've taken the shade on the brush and I'm just pushing this color upward, okay? From here to here, okay? I'll be taking the shade little by little, not too much at once.
Okay, I'll be doing the same on the other eyes. See, I'm slowly building up the intensity, okay? Otherwise, the colors will look patchy on your skin. So, take your time, okay? Just as I am taking my time with the colors. Now I'll be taking a clean brush. I keep dropping stuff, don't mind. So I'll be taking this brush जिससे हमने transition लगाया था, and I'm just, you know, blending the shade ताकि कोई एक harsh line ना लगे, एक blended सा look है. I hope you can see, guys. Okay. Now I'll be intensifying my crease with this shade right here called Maple. Okay, you know, feeling like using all the shades available on this palette. Like the shades are gorgeous, like gorgeous. Okay, I'm intensifying the crease a little more. It's giving me a cat eye kind of effect, the shadow. I'm just doubting if it's even or not, so I'll just make sure both the eyes are even. Okay. Okay, I think I'm satisfied. Now we will apply a shimmer slightly lighter than the shades on our lid. I think I'm gonna go with gold today. Not like gold gold, but like champagne kind of shade, okay? So I'll be taking this shade right here called Shimmering Pearl on a flat shader brush. Yeah, this one from PAC. Number is 102, and I'll just take that directly on the brush and kind of just apply it here, okay? I'm not going entirely, I'm just applying it over here. Even the shimmers are really beautiful.
we don't have a black shadow in this palette, so I'll probably be using another palette for black eyeshadow. That's the only thing which is missing in this palette. A black shadow would have changed the game of this palette. My mom will say like you've done too much makeup for a casual dinner. It's not a fancy dinner. It's just a casual dinner. But I've done a little too much today, but it's okay. I am a flamboyant girl and I've accepted it. Like, I don't wanna deny my authenticity. I am somebody who's extra. And I like it, okay? I like being extra. I don't mind being extra. Yeah. I'm just going to clean right here a little bit. Mm. Okay. I think I'm liking this look. I'm taking a clean brush and I'm just smooth, making these color a little bit smooth. It's looking a little bit patchy, but I'm going to fix it. Okay. Yes, now we are talking. I'm going to tightline my eyes with this kajal from K Beauty. My neck is hurting. Let's do a little exercise. Am I going to regret that I did a little too much for a dinner? But it's okay. Should I do a wing liner today? Or should I skip? I think I'm going to skip because it's already looking like I've done a cat liner, which is not the case, but last we take them. Let's move on to our lower lash line. And for that today, I'll be using this brush, which is my favorite brush for lower lash line makeup. This one from Tosh Beauty, P08. And I'll be taking this shade Truffle. Just apply only on the outer corner. This eyes. I'm kind of matching this line from here to here, okay? That gives a nice even out look. Okay.
Now I'll be taking a lighter shade, which is this shade called Seashell, on the brush, and I'll apply it below that shade just to kind of diffuse the color into my skin. On the other eye as well. Too glam to give a damn, honey. What is it? What have I done? Okay, so today on my waterline, I'm going to use a lip liner. Yes, you heard it right. You can use lip liner as your eyeliner, eyeliner as your lip liner. There's no hard and fast rule for makeup, okay? So I'll be using this Mars lip liner in the shade Peachy Glow, and I'm going to apply it in my waterline. See the difference? It's looking so pretty. Okay. How is it possible that I'm doing my waterline and not getting teary eyes? Like, it's not possible, not at all. So we are done with our eye makeup, and I'm going to just apply mascara. Or should I apply falsies? नहीं, कुछ ज़्यादा हो जाएगा. Like, oh, too much. My mom will refuse to go out with me because she doesn't like makeup herself, and no, she won't refuse. Like, but still, you know. I'm getting too much sweaty. See, water is coming out of my nostrils. I can't help it. मुझे बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है, even though ठंडी है नहीं. It will dry on its own. We don't have to worry about that. Such beautiful lashes. Do you think that I need falsies? Absolutely not. I love my lashes. Guys, you must think now that I never use lenses on my eyes. I never use lens. Why? Because I do have too many lenses, like pouch full of lenses, you can see, but I never use lens because मुझे डर लगता है, like literally डर लगता है lenses से. I don't want to lose my eyesight because I have heard and seen few cases जिसमें लेंस से आँख में डैमेज हो जाता है. मतलब आँख चले नहीं जाते, ऐसा भी नहीं होता, बट आँख में इरिटेशन हो जाते हैं, आइज रेड हो जाता है, निकालने में प्रॉब्लम होता है. सो मुझे खुद को कष्ट देना फैशन के नाम पे पसंद नहीं है. आई लाइक फैशन जिसमें मुझे कष्ट ना हो. सो आई डोंट लाइक अप्लाइंग लेंसेज, और मेरे आइज़ ऑलरेडी बहुत वाटरी है, लाइक सो आई डोंट यूज़ लेंसेज इन माई आइज़ एवर. शादी में तो मैंने किया ही नहीं लेंस अप्लाई, वैसे मैं क्या ही करूँगी. आई हैव केप्ट लेंसेज जस्ट इन केस अगर किसी का मेकअप कर रही हूँ मैं एंड उनको अगर लेंस चाहिए तो इसलिए मैंने रखा हुआ है, बट मैं खुद पे कभी यूज़ नहीं करती.
I forgot to curl my lashes, but I think I'm good ऐसे ही. I don't want to curl my lashes. इसे अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's just that I'm not feeling like curling my lashes today. Now let's move on to our brows. But उससे पहले हम अपना पाउडर डस्ट ऑफ कर लेते हैं because it's been too long. तेरे भी सुने कर तेसी. It's been long. Oh God, it's been long. कि मैंने बहुत देर से पाउडर्स लगाया हुआ है. मुझे किसी परदेसी का पेन नहीं सुनना. I'm not interested. Guys, if doing फालतू बकवास was a full-time job, I would have been a billionaire. Billionaire. Not even kidding. This मच्छर bite is still peeking through, even after applying too much products. ये मच्छर मेरा पीछा कब छोड़ेंगे गाइस? प्लीज प्रे फॉर मी. मुझे मच्छर ना काटे. Now let's move on to our brows, and for that today I am using my favorite NYX the brow glue. And मैं पहले ब्राउ ग्लू लगा लेती हूँ, देन आई डिसाइड कि मुझे ब्राउ फिल करना है नहीं. माई बेबी हेयर्स. I've been doing my brows by myself since more than like 3-2 months. गाइस, अगर आपको कभी भी ब्रेकआउट्स हो जाए ना, तो डू नॉट अप्लाई मेकअप. ओके, बिकॉज ब्रेकआउट्स आपके फेस पे अगर हो रहा है फिलहाल या फिर कभी भी होता है, तो आप मेकअप से उसको हाइड करने का कोशिश मत करो. अदरवाइज वो और ज़्यादा केकी और अच्छा नहीं लगता. लेट योर फेस हील प्रॉपरली. अच्छे से अपने स्किन को हील होने दे, उसके बाद मेकअप अप्लाई करें, बिकॉज वो और ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस को लंबा कर देगा. जब भी मुझे अगर कभी ब्रेकआउट होता है, यूजुअली मुझे बहुत ओकेजनली होता है बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, सो आई डोंट प्रोड्यूस दैट मच ऑयल ऑन माई स्किन. तो उतना ज़्यादा मुझे होता नहीं है. रेयरली कभी अगर होता है, आई प्रॉपरली लेट इट हील अच्छे से. एंड जब वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाता है, उसके बाद ही मैं मेकअप वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस को बहुत खींच देता है. I will let it rest for a while, and then last में देखेंगे if I want to fill my brows or not. So now let's just add a little warmth to our face, and for that I'm using NYX palette. And इसका ये lightest shade मैं use करूँगी अपने face पे. I just hate palettes which don't have mirrors. Like एक mirror दे देते तो आपका क्या जाता? Seriously, I don't like palettes without mirror. It's not handy at all. Like palette पकड़ो फिर अलग से mirror पकड़ो. That's too much work. Okay, so as you can see, I have this natural shadow forming right here. मैं सामने देख रही हूँ राइट, यहाँ पे एंड यहाँ पे. तो उसके exactly above हमें contour करना है. Okay, and with very light hands, and you don't have to drag it down. You have to push it down. Okay.
Guys, if somebody makes you fun now for having flaws, for having pimples, just stay away from such people, you know, because they are biggest fake and cruel and unkind kind of people. We should never make fun of somebody's appearance. Never ever. I remember when I was a little kid, like I must have been 14 or 15, okay, and I went to my नानी घर, which is in Patna, and वहाँ पे मुझे skin infection हो गई थी. Literally, I got too many pimples, too many boils on my face, forehead, face, and बस neck तक, and इसके ऊपर तक, क्योंकि उसके नीचे हुआ नहीं मुझे. And I used to go places, मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था. It took too long to heal, okay. And I was on medication and everything, but still वो ठीक नहीं हो रहा था. But still, few aunties and few ladies used to make fun of my appearance, and as a kid, it used to break my heart, like, you know, how cruel some people can be. A little girl is going through infection and these ladies were making fun of my appearance, like literally on my face. Not even, ऐसा नहीं कि दूर से बोल रहे और मैंने सुन लिया, मुझे ही आके मुझे बोल रहे हैं ऐसे वैसे, ये वो, ये लुकिंग अजीब, ठीक करो, ये करो. मुझे भी पता है I'm looking अजीब, but it is so unkind and so bad to make fun of someone like this. Okay, so we've added warmth to our face now. इससे ज़्यादा I don't want to add warmth because I'll be going full on with my blush. As you all know, I love blush, a good blush. I think I've never used this blush from this palette. I think I should try this one. ये बिल्कुल अनटच्ड है, मैंने बस ब्रश के पीछे से पोक कर दिया. आई नेवर हैव यूज्ड दिस ब्लश एवर. सो लेट्स ट्राई इट, कैसा लगता है. सो आई एम टेकिंग विद दिस ब्रश फ्रॉम मार्स एंड I'm not going here today because as you can see I have mosquito bites and this blush has shimmery particles in it. Like it's literally like a blush and highlighter hydrate. Okay, so I'm going to avoid wherever I have texture. I'm just going up right here. Okay, so as you can see it has shiny finish to it. Wherever, I mean, sorry, why the fuck am I fumbling so much? I am so irritated with myself at this point. Wherever you have texture, make sure you do not apply your highlighter over there, okay? जैसे इसमें highlighter mix है, as you can see, blush and highlighter दोनों ही है इसमें. Charlotte Tilbury Nudegasm palette के blush में mix है, मतलब highlighter और blush दोनों mix है, right? तो जहाँ भी आपके टेक्सचर है, जैसे मेरे यहाँ पे आई लाइक टू गो फुल ऑन विद माई ब्लश, ओके, बट टुडे आई एम अवॉइडिंग सिंस आई हैव दिस टेक्सचर. तो मैं बस हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ. स्टिल आई कैन नॉट फॉरगेट माई नोज. आई लव पुटिंग ब्लश टू माई नोज एंड हाईलाइटर टू. आई लव पुटिंग ब्लश एवरीवेयर बेसिकली. And kabhi when I'm not doing my eye makeup, I'm just going with eyeliner or only with mascara, what I do is that I apply that same exact blush to my lids so that it makes your face look cohesive and you have this nice harmony going on all over. This blush is more like bronzer, like it's giving me this nice glowy warmth. It is more like bronzer. It's literally orange in color, you can see. And there are some brands which has literally orange kind of bronzers, which literally give this kind of finish only. Doesn't look like bronzer, looks like orange blush. For lipstick today, I'm very confused. Like, should I go brown? Should I go peach? Should I go nude? Like, I'm so confused. पहली बार I did not decide कि मुझे कैसा मेकअप करना है. I just went with the flow and I think it's not looking bad. It's looking cute only. Like the eye makeup is going with the outfit and this is exactly what I wanted. I just need to check the time. अभी 8:30 हो रहा है and I have to leave
around 9 or 9:30. I like taking my blush to my temples, don't know why. I'm still not satisfied with the blush. I'm going to put a little more. Should I just stop? Otherwise I'll end up looking like Bandar, but yeah, let's just move on to the lips now. Whew, I'm kind of tired. For lips, I'm feeling like using this lip palette from Forever 52. Okay. This palette, which I bought when I was doing makeup classes, तो it used to be very very handy and मतलब आपको 10 तरीके का लिपस्टिक नहीं ले जाना for practice. You have all the shades and you can mix and match and make your own shade. Okay. So for today's makeup, for today's lipstick, I'm going to use this palette only, and you can see I've used quite a lot. Right. I really like this palette. If you are a beginner, you can buy this palette because आपको बहुत सारे lipsticks नहीं लेने होंगे, and not just lipstick, you can apply blush with it also, as it is not a lipstick palette, it's a multitasker palette. You can also apply for contouring with brown shades, with for lipstick for shades, you can mix and match and make your own shade of lipstick. You can also use it as cream blush. Okay, cream blush होता है ना. I personally don't like cream blush. I don't know why. I prefer powder blushes over cream blushes. पता नहीं क्यों. It's just my own preference. Although I do have few cream blushes with me, but I prefer powder blushes over cream blushes. पता नहीं क्यों. मतलब लोगों को उल्टा पसंद है. आजकल लोग ज़्यादा cream blushes use करते हैं, but I personally prefer powder blush. So I'll be using today this shade right here, okay, which is a nude shade. I think I'll be a little subtle with my lipstick today, as we've gone all glam with our eyes. So I'm taking a slightly darker shade and drawing a liner with lipstick only. This shade is very similar to the Pillow Talk lipstick. Very similar. I do have that lipstick. It is very very similar to that shade. Okay. I'm going to apply a tad bit of red on the center. I think I will go over with the lip liner because my lips are looking very flat. As you can see, I have very teeny weeny kind of lips, like very thin, very thin. So I'll be going over with a lip liner. I'll be using this lip liner from Swiss Beauty in the shade Choco Nude, and I'm just going to outline my lips.
Now we are talking. Okay, I'll be using a tiniest bit of clear gloss in the center. उससे पहले I will use my fixing spray from PAC. Okay guys, I'll be doing my hair and my neck makeup off camera, and I'll be back in a Okay, guys, so I did my hair and I quickly went to the dinner because I was getting really late. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and अगर आया, do not forget to like, share and subscribe. And bye guys, take care.